at a whole range, all the way from the realities of the very large component of the economy, the unorganized or the informal sector. And on the other hand, the global sort of power balance is changing, and as a result, probably the global financial as well as trade balance is also likely to change in the next few years. So that was the sweep of the previous session, and it was, if anything, it further enhanced anxiety rather than, So in a sense, this session, and that's why, Mahesh, I'm grateful that you're with us, because we have to move from analysis, and I'll request all the 4 panelists to move from analysis to what can be done, at least ameliorative, if not completely transformative, because that, there's a different moment for that. And we'll have perspective not just from pure economists, but also, from Dilip, who has been journalist, activist, commentator, and, a public person. And of course, Gurdeep Sappal, who is on the interface between, intellectual work that economists do, but feeding it to the political decision makers who eventually, make the institutions happen, which, determine what part of this policy or analysis gets used. So I will therefore request Professor Santosh Mehrotra to give us an overview of what can be done to address the job crisis. And Santosh, I request you not to spend too much time on the crisis itself. I think that's well understood and lately lamented, but let's try and focus this session on way to move forward. I'm going to pick up from where, in a sense, the previous discussion left off, where we were talking about large firms not being able to create jobs and the smaller ones actually generating much more. And of course, I'll pick up the issue that Arun raised about micro and small. And I think, unfortunately, while I completely agree with the need for more large firms creating jobs, that's not going to solve the problem. Just as, in response to my young friend's question about government jobs, that's not going to solve the problem, because in the last 20 years, government jobs have not grown. Which does, so, however, let me address both the issues. Let me begin with the government, because that's what the government can do. That's something entirely within its own control. However, generating jobs in the private sector is something that government has to facilitate and get its policy right. What are the jobs in government that are not being filled? I think that's where the focus needs to be, unfortunately. And there are at least 3 sectors where, lots and lots of jobs are available. I can give you numbers on that, but I won't. One is health, and we desperately need more doctors, more nurses, more paramedic staff, which this government is not spending on, and we can prove that with budgetary data. On education, where literally we've got lakhs of teacher positions in schools as well as in tertiary education which are unfilled. And thirdly, if you want to improve the quality of governance, then you've got to fill the police vacancies. There are apparently 4.25 lakh sanctioned posts, and only and as much as 1.1 lakh police posts are not filled. So that has to be done. The second thing on the government, I think the government needs to really think seriously about, that we cannot have a situation where 89% of all jobs in government are Group C and D jobs. That's the current situation. Only 11% of all government jobs are A and B jobs. Most of the people sitting here are aspiring for A and B jobs. And the third point I made about government jobs is that why wasn't this massive clamor for government jobs happening
between 2004 and 14. Because the economy was growing at 8% and it was generating 7.5 million new non-farm jobs every year. That number has dropped to 2.9 million per annum between 2013 and 2019. And since then, it has fallen even further. Let me turn to the other issue about the private sector. How can the government actually ensure that smaller firms begin to grow into bigger firms and therefore they generate more employment? It's not just that the bigger firms, medium and large, need to generate more jobs. Agree entirely that that's going to happen when investment rates rise, but investment rates are not rising because capacity utilization, as Mahesh rightly pointed out, is as low as it is. But the real point is that there isn't an industrial policy in place which is cross-sectoral, which is horizontal. What we have in the name of a industrial policy in our government is PLI, the performance-linked initiative, which is focused on 12 sectors. 11 of them are not even labor-intensive. So we need a cross-sectoral policy, and I'm going to just say two things and I'm going to stop in this regard. What do I mean by a cross-sectoral policy? First of all, we've got to even have an industrial policy and a manufacturing strategy, and the previous government didn't, and this government doesn't at all. Make in India is not a manufacturing strategy. Make in India has led to a reduction in the manufacturing's contribution to GDP from a 25-year average of about 17% until 2016. It came down to 15% from 17% to 13%. This is unbelievable. This has never happened since 1991. Secondly, it led to manufacturing employment falling. Why was manufacturing employment still doing reasonably well in the previous regime? Because it was labor-intensive manufacturing which was growing. What are the labor-intensive manufacturing sectors? Leather and footwear. Second, food processing. Third, textiles. Fourth, garments. And finally, wood and furniture. These four sectors account for 50% of total manufacturing employment. And look at the beautiful dynamic that was in place. And that's the sort of supply and demand thing that we have to solve, which is in a sense which was Arun's point. And I completely agree with him. There has to be a new focus on the unorganized sector in our policy and a new focus on cluster development. There are 6,500 clusters spread across our country in the manufacturing sector. I don't have the time to go into details. The point is, we have a cluster development policy, but the money is not put in there by the Textiles Ministry or by the MSME Ministry, and it's a very badly designed and implemented strategy. Why is this important? And this is important, Mahesh, even for the female labor force participation rate, because the clusters employ MSMEs, mostly unorganized units, and they are located all across our vast and varied land. In other words, they are located in Mufassil towns. They are in Muradabad. They are in Firozabad. They are in Khurja. You understand what I'm talking about. And if there was a focus strategy on these sectors, it would enable. It requires four types of policy. One is credit policy, second is technology upgradation, third is market development, and the fourth is enabling them with skill development. Each of these are separate areas. We don't have the time to talk about it, but this government has none. I'm not saying the previous government did, unfortunately. This government has none whatsoever, which is a very important reason why the small and marginal units are not generating jobs. से अनुरोध है कि अगर कुछ बात हिंदी में भी कह सकें तो कुछ हमारे दिलीप आप शुरुआत करें। थैंक यू। सबसे पहले तो इस पैनल डिस्कशन के लिए और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए
देखिए हम लोग एक बहुत यूनिक समय में है, जिस समय इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट राइट्स हमने देखे हैं। ये पहला साल है जो बेरोजगारों का दंगा हुआ इस देश में, जो कि रेलवे जो जॉब्स थे जिसको लेकर ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, ये 2 स्टेट में ट्रेनें जलाई गई और पुलिस थानों के सामने प्रोटेस्ट हुआ, कई लोग मरे। मतलब ये शायद इंडिया की हिस्ट्री में मेरे अपनी जानकारी में इस लेवल पर कभी नहीं हुआ था। तो जॉब की एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, इसको लेकर 2 ओपिनियन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो डाटा आ रहा है वो एक चीज़ बोल रहा है, लेकिन जिस एपिस्टेमोलॉजिकल एक जहाँ से जो मेरी ग्राउंडिंग है, जहाँ से मैं चीज़ों को लेता हूँ, वो मुख्य रूप से सोशियोलॉजी और मास कम्युनिकेशन है। उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे रेलवे के जॉब्स के लिए कोई अगर ट्वीट कर रहा है तो उस पर हमें 9 मिलियन 10 मिलियंस तक वो ट्रेंड में हिट हो रहा है, और ये यूनिक यूजर्स हैं। तो इतने लोग रेलवे की जॉब के लिए ट्वीट कर रहे हैं, तो दिस नंबर्स आर टेलिंग समथिंग एक्चुअली। या इवन जो रेलवे का जो नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकली थी 2018 में, आई थिंक द एग्जैक्ट फिगर इज़ 32,000 जॉब्स के लिए, और उसके लिए एप्लीकेंट्स आप लोग जो लोग नहीं जानते उनको शायद बहुत चौंक जाएंगे कि 1.2 करोड़ एप्लीकेंट्स थे उसके लिए। उसी को लेकर ये सारा कुछ प्रोटेस्ट हुआ, और वो ग्रुप सी एंड डी की जॉब्स थी जिसकी इनिशियल सैलरी 17,000 है, उसके लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। और उस एग्ज़ाम को 2 बार रिटन एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी पोस्ट के लिए, जो बिल्कुल स्किल की जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑफिस के बाहर एक पियन खड़ा है उस तरह की पोस्ट है, वो कहीं कहीं पानी पिलाने की पोस्ट है। इसके लिए 2 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरा जॉब का हमारा जो सिचुएशन है वो किस तरह से ये कितना ग्रिम है। इसके आप कुछ ये सिम्टम्स हैं जो हमें अपने आसपास दिख रहे हैं। एक अभी आप हरियाणा के रेवाड़ी में अगर आर्मी की जॉब्स के लिए एक अगर जो उनकी रैली होती है जिसमें वो आर्मी के जवान भर्ती होते हैं, तो उस दिन भगदड़ मचना तय है। ट्रेन की छत पर अगर वो डीजल लोकोमोटिव है, ट्रेन की छत पर लोग सवार होकर आएंगे और पूरे शहर में क्योस मच जाता है आज की तारीख में अगर एक आर्मी की रिक्रूटमेंट की ड्राइव चलती है। तो और ये एन नंबर ऑफ जगहों पे हम लोग इसको देख चुके हैं। कोई नॉट ऐसी कोई चीज़ में आपको कोई सरप्राइज एलिमेंट इसमें नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो मारामारी है वो अपनी जगह पर है, लेकिन सॉल्यूशन मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ महेश से कि सॉल्यूशन जो है वो बड़े एंटरप्राइज, बड़े कॉरपोरेट, बड़े इंडस्ट्री में ही है, वहीं से सॉल्यूशन आएगा। ये ग्लोबल तरीके से भी अगर देखें तो ये सॉल्यूशन वहीं से आना है, ये एटलीस्ट हमारी डायरेक्शन वहीं होनी चाहिए। ये इसको लेकर मैं बहुत 2 थॉट्स मेरे नहीं हैं कि ये सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। तो निश्चित रूप से सप्लाई साइड पर काम करने की भी ज़रूरत है, वहाँ पर हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम जो आ रही है कि जीएसटी के आने के बाद से जो स्टेट्स की एक उनका जो एल्बो रूम है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चलाने का, ये बहुत ज़्यादा घट गया है। तो हमको डिफरेंट मॉडल्स नहीं दिख रहे हैं जो कम्पीट करें। मतलब एक केरला मॉडल हो, एक आंध्रा मॉडल हो, एक आसाम का मॉडल हो, एक गुजरात का मॉडल हो, जिनके पास अपना एक इकोनॉमिक माइट हो, फाइनेंस रेवेन्यूज़ हो, और इससे वो अपने मॉडल्स क्रिएट करें और उसके बीच में एक कंपटीशन हो और ये बताए तमिलनाडु मॉडल कि हमारा मॉडल बेटर है, बेटर जॉब जनरेट कर रहा है। ये अब पॉसिबल नहीं है। इस समय डायरेक्ट टैक्सेस आप जानते हैं पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी, अब जीएसटी के बाद अभी सारा कुछ यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा किसी को एल्गोरिथम दे नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई आपको मैन्यूवर करने की कैपेसिटीज़ आपके पास नहीं है। तो अब ये कहना कि क्यों नहीं कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट कोई बेहतर मॉडल दे रही है, ये हम थोड़ा ज़्यादा डिमांड करें उनसे। ये अब पॉसिबल इस समय नहीं है, जब तक कि आप ये फेडरलिज्म को नए ढंग से डिफाइन करें, जीएसटी पर उस तरह का कोई एक टेंशन आए कि ये नहीं डिलीवर कर रहा है, हम किसी और मॉडल की ओर जाएं, पता नहीं ये पीछे लौटना पॉसिबल है भी कि नहीं है जहां हम पहुंच गए हैं। तो स्टेट्स एक्चुअली अपने ढंग से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब हो गई है। सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर कटोरा लेकर आ जाते हैं
सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के पास कि हमारा ड्यू वापस कर दो, और ये हम हर तीसरे चौथे दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से भी एक प्रॉब्लम आ रही है। बाकी सारी चीज़ें देखिए जो दिख रही हैं वो सबके सामने है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से गिर रहा है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जॉब अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता है। कितना भी हम वो फार्म जो नए लॉज थे उसको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन उसको अल्टीमेटली मार्केट्स के साथ इंटीग्रेट नहीं होने का शायद ऑप्शन नहीं है, और वो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से एग्रीकल्चर चल रहा है, बहुत ही फ्यूडल स्ट्रक्चर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमको काम इस पर करना पड़ेगा। 2 सॉल्यूशन मैं बहुत संक्षेप में रख रहा हूँ। एक तो कि जो सप्लाई साइड में जो काम होना है वो शायद और अच्छे तरीके से होना चाहिए। 91 मॉडल ने अपनी शायद शुरुआती जो एनर्जी थी वो अब खो चुका है, बहुत ज़्यादा कुछ उससे अब शायद डिलीवर नहीं हो रहा है, उसको नए ढंग से डिफाइन करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने पर भी काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए एजुकेशन को भी हमको नए ढंग से काम करना पड़ेगा। जो पुराना नेहरूवियन मॉडल के समय से ही था कि आप नीचे लोगों को लिटरेट बना दीजिए और ऊपर कुछ छोटे से सेक्शन को आप अच्छे जॉब्स के लिए तैयार कीजिए, ये मॉडल भी अब काम नहीं कर रहा है। तो ये बीच वाला जो सेकेंडरी और बेसिक जो कॉलेज एजुकेशन है, इस पर भी शायद काम करने की ज़रूरत है। और कैसे वो एजुकेशन जॉब के आसपास लोगों को ले जाता है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। और जिन स्टेट्स ने थोड़ा बहुत इस पर काम किया है, जॉब्स आप देखेंगे वहाँ जा रहे हैं। तमिलनाडु में जॉब आ रहा है, केरल में आ रहा है, इवन आंध्रा में आ रहा है। आंध्रा ने अपने सारे स्कूल सिस्टम को तेलुगु मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कर दिया, कोई अब वहाँ पर तेलुगु मीडियम स्कूल नहीं है। तो ये अब जॉब्स वो ले जाएंगे, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। तो कुछ प्रोसेसेस होते हुए भी हम लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है उससे भी सीखने की ज़रूरत है। ये शुरुआती तौर पर मुझे ये हम सब लोग दूसरी बार भी बोलेंगे, बट लेट मी कम टू महेश। Thank you. I will speak in English. I'm Yes, yes. very bad in Hindi, But and I'm ashamed of focus it. more on I'm solutions. ashamed. Yeah, only on solutions. I will not speak of data, hopefully at all. So, I will make a case that we need to learn a lesson from the experience that we saw from 1991 liberalization. We saw a big jump in entrepreneurship. We saw Schumpeterian entrepreneurship. Large number of firms died, and large number of firms were born. And the economy grew at a much faster rate. And that economy was very, very different from the economy that we understood before that happened. The growth of the services sector, the growth of a very different manufacturing sector. A sector where the cement industry was controlled for what is the price of a 50-kilogram bag became a competitive industry where Ambuja cement suddenly made a big difference to cement. The transportation of cement through sea was discovered by the Ambujas, and they beat the hell out of well-established ACC. So you've had a lot of change in the cement industry after the price controls were taken away. We had massive churn in the steel industry. And it's wonderful to see Tata Steel survive all the competition that came and became bigger, stronger, and tried to also become global by taking companies globally, and then 2008 put a spanner in the works for that. But that is what created employment. So may I, say that post-liberalization, I think in the mid-1990s, late 1990s, the survey said that there is no increase in employment, but there was an increase in non-farm employment. So farm employment declined, non-farm employment increased. I think, Santosh, you have shown this in the data as well. We require to reignite that. Now, how do you reignite that? How do you do that? Do one more 91, 92 liberalization. Have faith in private sector firms. Have faith that they can create employment. So, one thing to do is to learn something from what Dr. Kaushik Basu told us. And, we have tried in recent times to address the problem of corruption.
And the problem of corruption is by putting people behind bars, doing massive raids on them, to say that you took a loan from the bank and didn't pay it and you are a cheat, and so on and so forth, and those people go behind bars. What happens when we do this? You demoralize, demotivate people. Person for a loan becoming an NPA without knowing that businesses can fail is not a good strategy. If it is a strategy at a government level to punish people who turn their loans into NPAs, is not a good strategy. But what did Kaushik Basu tell us? He said, punish the receiver of the loan, not the giver of the loan. Let's turn this in now. Which bureaucrat has suffered because of corruption? It's only industrialists who are suffering because of corruption. Who creates employment? Industrialists, not the bureaucrats. So from an employment strategy, hitting at the industrialist as we do so often, and every time we do it, every time one industrialist is raided, risky investments. They'd rather do investments where the government is a guarantor, where you are on the right side of the government, where you promote crony capitalism, the Schumpeterian capitalism, which is very, very destructive, but on a net basis creates more employment, more growth, is absent. So, I think policymakers need to recognize that liberalization, giving a freer hand to private sector is the solution. And I still agree 100% with what Professor Mehrotra said earlier. And I have also written on this, that the government, because it fails to provide us the services, it owes us. It owes us as taxpayers, we require to get the government to give me security. It does not give me security. You come to Bombay, I'm sorry, I keep saying come to Bombay, please do. Walk down the street in the business, in the business districts of Bombay. Walk down the street where my office is. Every office has a security guard. And every office has a security guard that works 24/7. Why do we need to hire so many security guards? Isn't it the job of the government to ensure that the law and order is good enough that my office is safe after I lock it? But it is not safe. We are employing far too many security guards after paying taxes when that problem is of the government. Why do we buy bottled waters? We should be ashamed of having these bottles over here because the government fails to provide us safe drinking water. You go to a developed country and you can go to a restaurant and say, please give me tap water. It's called tap water there. Tap water is safe. Most of us wouldn't dare touch tap water over here. So the government needs to employ more people that will give us better water, better security, better health services, better primary education. There's a great need for the government to employ people to ensure that we are all safe and we are healthy and we are educated. Leave employment otherwise to the private sector. This is my small suggestion. Thank you, Manish. गुरदीप जी, सुबह से पहले वाले सेशन और अभी भी 3 वक्ता बोल चुके हैं, 2 सेक्टर्स की बात नहीं हुई। एग्रीकल्चर तो मेंशन ही नहीं हुआ एक तरह से, जबकि आप जानते हैं कि आज की तारीख में भी करीब 47% लोग जो हैं उस पे निर्भर हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और हम सब उसके निर्भर हैं उसके आउटपुट पे। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन we can't talk about the national economy without talking about the agriculture sector. दूसरा, इन सब चीज़ों का, whether it is industry, agriculture or even services, the basis is what is called natural capital. हिंदी में जल जंगल ज़मीन। और पिछले 100 साल में हम लोगों ने अपने देश का जल जंगल ज़मीन का उसका इतना दोहन किया है कि वो बिल्कुल उसकी क्षमता कम हो। पंजाब में तो आप जानते हैं, प्लेस लाइक पंजाब, वी हैव अ ग्राउंड वाटर क्राइसिस, वी हैव अ सॉइल क्राइसिस, एंड दे आर जनरेटिंग एन एयर क्राइसिस विच कम्स टू दिल्ली एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा आप अपने सुझाव में बात करिए प्लीज़, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूँगा।
क्योंकि मैं बात इससे थोड़ा सा हट के करना चाह रहा था, और जैसा आपने कहा हिंदी में ही बोलूँगा, क्योंकि अभी तक जो बात हो रही है वो हो रही है जॉब्स जो पिछले 5-7 साल में नहीं आई। मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो अगले 4-5 साल में जो जॉब्स हैं उनका क्या होने वाला है। उसका कारण है कि बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती जॉब सेक्टर में आ रही है, और वो या तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कैटेस्ट्रॉफी, या तो वो अवसर में बदला जा सकता है देश में, या वो तबाही भी ला सकता है। और मैं बात कर रहा हूँ जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है दुनिया के अंदर, और जो होना ही है। वो नीति आयोग का कहना है कि 3 साल में हो जाएगा, किसी का कहना है 5 साल में, किसी का कहना है 30 तक हो जाएगा, लेकिन ये होने जा रहा है क्योंकि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, उस दौर के अंदर एक बेसिक फ़र्क होने जा रहा है कि अभी तक जो हम ऑटोमेशन करते थे, मशीन से काम लेते थे, अब मशीन को फैसला लेने का अधिकार दे रहे हैं। और एज अ कंट्री ये माना जाना चाहिए कि भाई हम लोग पूरी दुनिया का जो ऑफशोर आईटी वर्क है, करीब 64% इंडिया के पास है। पूरी दुनिया का जो बीपीओ का काम है, करीब 40% भारत के पास है आज की तारीख में। ये हमारी मेजर आईटी सक्सेस स्टोरी है। और हम कमोबेश इंग्लिश बोलते हैं, काम चलाओ इंग्लिश तो देश में अब काफ़ी लोग बोलना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में ये हम ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे कि हमको आइडियली इसका फ़ायदा होना चाहिए। और खुद नीति आयोग का ये कहना है, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर जो नई जॉब्स आएंगी उनमें से करीब 46% जॉब वो होंगी जो आज दुनिया में है ही नहीं। ऑक्सफोर्ड की स्टडी है कि 2000 के बाद, सन 2001 हम आईटी के अंदर लेते हैं, तब से लेके 2020 तक आधा % जॉब्स ऐसी हैं जो नए किस्म की जॉब्स हैं, और आने वाले 5 साल में 46% जॉब्स वो हो जाएंगी जो आज है ही नहीं। और क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हो? उसका एक बेसिक रीज़न है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी की बात नहीं है, 3 लेवल पे ये अपॉर्चुनिटी है। एक तो आपके एआई के सॉल्यूशंस क्रिएट करना, एक जो 46% नई जॉब्स आएंगी उसके लिए लोगों को रीट्रेन करना, वो दूसरी एक बड़ी समस्या है। और तीसरा जो डेटा जनरेट हो रहा है दुनिया में, अब इतना डेटा तो कभी दुनिया में आया ही नहीं। एक स्टडी कहती है कि आज से 30 साल पहले 1 गीगाबाइट डेटा को जनरेट करने के, स्टोर करने के लिए $5 मिलियन खर्च होता था, अब 2 सेंट होता है। तो इतना डेटा, इतनी कंप्यूटिंग पावर आ गई है, उस डेटा को हैंडल करने में एज अ नेशन हम लोग कहाँ खड़े हैं। और इसका एक बेसिक चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अभी तक हमने टच नहीं की, कि पूरी एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, अगर हम इसके हिसाब से चेंज नहीं कर रहे हैं तो वी विल मिस दी बस। और वो चेंज क्या है? जब से शिक्षा का एक सिस्टम शुरू हुआ है उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। एक साइंसेस की, टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम है, एक ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम है, एक फाइन आर्ट्स की स्ट्रीम चलती। और अगर मैंने फिजिक्स पढ़ी तो मुझे जरूरी नहीं सोशियोलॉजी पढ़ना, आज तक यही था। या मैंने अगर सोशियोलॉजी पढ़ी है तो मुझे कोडिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब ये चेंज होना है। जैसे मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ है, मैं कार चला रहा था, सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दी। अब मुझे डिसीजन लेना था कि मैं साइड में हो जाऊं या टकरा जाऊं। साइड में मेरे 2 बाइक वाले चल रहे थे, अगर मैं साइड में होता तो वो बचते नहीं। तो आई टुक अ कॉल कि लेट मी हिट द कार। तो आई हिट द कार, फेस्ड एक्सीडेंट। मान लीजिए ये सेल्फ ड्रिवन कार होती, एआई पे ड्रिवन होती, तो वो कार कैसे फैसला लेती? वो कैसे फैसला लेती कि मुझे साइड वाले को बचाना है या खुद को करना है? इसमें एथिकल सवाल है, इसमें साइकोलॉजी के सवाल हैं। और ये सवाल वो हैं, ये वही प्रोग्राम कर सकता है जिसने साइकोलॉजी पढ़ी हो और कोडिंग पढ़ी हो, जिसने एथिक्स पढ़ा हो और कोडिंग पढ़ी हो। और ये तमाम प्राइवेसी का इशू है, एथिक्स का इशू है, ट्रांसपेरेंसी का इशू है, एआई में बायसिस का इशू है। तो यानी जो दौर आ रहा है उसमें आप केवल कंप्यूटर साइंस पढ़ के काम नहीं चला पाएंगे, आपको इंटरसेक्शन चाहिए, मल्टीडिसिप्लिनरी। और हम बात कर रहे हैं लेकिन इस दिशा में कोई अब काम नहीं हो रहा है। और अगर 3-4 साल में काम नहीं होना शुरू हुआ तो विल स्टार्ट मिसिंग दी बस। हम कहते हैं कि हमारे 5000 एआई के पेटेंट्स, अभी मैं डेटा देख रहा था 10 दिन पहले आया था कि 5000 एआई के पेटेंट्स हो गए और हम 8वें नंबर पे हैं दुनिया में एआई में। ये छुपा जाते हैं कि 85% तो 2 ही देशों के पास है, चाइना पे
65%, 20% के करीब यूएस के पास। उसके बाद हम 8वें नंबर पे भी आए, पूरी दुनिया 5 लाख है, हमने 5000 कर लिए। इट डजंट सर्व एनी पर। तो एक तो हम एजुकेशन सिस्टम को अगर अब डील नहीं करते, चेंज बेसिकली नहीं करते, तो हम एआई में प्लानर लेवल पे तो जाएंगे नहीं। सेकंड लेवल रीस्किलिंग का है, वी आर नॉट रीस्किलिंग। इफ द नीति आयोग पेंट्स अ सिनेरियो कि 46% जॉब्स विल बी न्यू, विल रिक्वायर न्यूअर स्किल्स, हु विल रिट्रेन दोस पीपल? आज हमारा 60% वर्कफोर्स वो मिडिल लेवल है, वो क्लरिकल लेवल है, वो जो काम कर रहा है वो ऑटोमेट होने हैं। गवर्नमेंट नहीं करेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर कर देगा, क्योंकि स्केल्स उसी पे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव आप उसी पे रहेंगे। तो इस डायरेक्शन में वी आर नॉट टॉकिंग। और थर्ड जो है कि जो डेटा साइंसेस पे हम लोग सबसे ज़्यादा एज अ नेशन कर सकते हैं, जहाँ पे हम काम ले सकते हैं। मेरी जनरेशन और मेरे बाद, मैं 90s का प्रोडक्ट हूँ, मतलब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया 91 में, एग्जैक्ट उस ईयर में जब चेंज आया, और मैंने देखा था कि किस तरह से पूरा एक माहौल चेंज हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे सरकारी जॉब करनी है, मेरे किसी दोस्त ने नहीं सोचा था, और मेरे से 1 साल सीनियर वाले सब सरकारी वाले हैं। जस्ट 1 year एवरीथिंग चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज। देवर कंप्यूटर कोर्सेज, देवर आईटी कोर्सेज, उसमें मैनेजमेंट के कोर्सेज थे, अलग अलग स्ट्रीम्स खुल गए। आज हमको पता है कि 5 साल में होने वाला है, वो नहीं हो रहा है। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज। और ये शायद पहला डेकेड होगा आज़ादी के बाद जिसको हम खोने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। और मैं आई कैन जस्ट लास्ट 1 मिनट कि अगर आप देखें तो आज़ादी के बाद क्या हुआ, जब 50-60s में था, तो वी एज अ नेशन डिसाइडेड विल नीड इंजीनियर्स, विल नीड टीचर्स, विल नीड लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर बना। आप इंजीनियरिंग में, टीचिंग में, इंटेलेक्चुअल उसमें, एडमिनिस्ट्रेटर्स में, आर्ट कल्चर में, जो सॉफ्ट पावर की तरह यूज होना था, एक पूरा ट्रेनिंग शुरू हुई। 70s में वी डिसाइडेड विल गो फॉर एग्रीकल्चर। पूरी दुनिया में एक देश में जाल बिछ गया, एग्रीकल्चर, स्पेस एंड न्यूक्लियर। 80s में वी वेंट फॉर कंप्यूटराइजेशन, पर्सनल कंप्यूटिंग, तो एक सक्सेस स्टोरी। 90s में इट वाज सर्विस सेक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, डिजाइन, वी वर देयर। दिस इज द फर्स्ट डेकेड। We know what is coming, we know how world is changing, we know what is required, but as a nation we have failed in last 7-8 years to do that, and which is a grave challenge in coming years. मैं आपके वाले पॉइंट को मैं छुआ नहीं, क्योंकि आप उस पर आप बोल सकते हैं, लेकिन हाँ लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात अलग है, पर एज अ पॉलिसी अगर हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नीति आयोग ने 2018 में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाला, डिस्कशन पेपर, और बोला 3 साल में वी विल मिस दी बस। 21-22 में वो सिर्फ एक सेकंड डॉक्यूमेंट निकाल पाए हैं। अगर कोविड ना होता तो वी वुड हैव मिस दी बस। कोविड की वजह से डेडलाइंस शिफ्ट हो गई हैं, बट दिस इज वन एरिया फॉर जॉब क्रिएशन, जॉब रिटेंशन, एंड ensuring that people who are employed today remain employed 5-7 years from now is another big question that we should be discussing. Thank you, Gurdeep ji. You've given a new dimension to the job crisis, which is driven by dramatic technological changes. But I want to draw the attention of particularly my economist friends. I think, as you refer to the fact, कि हम सब, Dilip referred to the fact, we all suffer from different epistemologies, and I'm saying suffer because we are imprisoned by what we, what is our discipline. Only people like me who are just kibitzers, who are just dilettantes, को थोड़ा economics भी पढ़ लिया तो थोड़ा humanities भी पढ़ ली. We actually have the luxury of seeing problems in a greater totality. So I find it amazing that the economics community is not recognizing that we are first and foremost suffering from an ecological crisis. The very basis of the economy is not, by the way, the labor theory of capital. Labor couldn't even be applied if there were no natural resources, right? So we've now reached a point, and COVID was one great warning from nature to us, that we have to stop the seriously exploitative relationship that we have with nature, which has got built into this
whole economic paradigm that we also bought into. Even today, our greenhouse emissions are growing faster than our GDP. Unemployment is growing lower than our GDP. Employment is growing lower than our GDP. What does that tell us? We're destroying the very basis on which we're likely to live. So this is a problem, but it is also a great opportunity. Praveen mentioned that 11 crore people worked under Narega. उन्होंने क्या काम किया? They didn't work in MSME. They didn't work in the service sector. 90% of Narega work is earth work. अगर आप मिट्टी खोदते हैं तो क्या करते हैं उससे? बेसिकली तालाब को गहरा कर रहे हैं, या मेड़ बना रहे हैं, मेड़बंदी कर रहे हैं, कंट्रोल ट्रेंचिंग कर रहे हैं, छोटी मोटी पुलिया बना रहे हैं. You know, these are the things that are done in Narega. If we can systematically use the Narega and Narega plus outlays to reinvest in our Jal Jangal Zameen. We have roughly 100 million hectares of land out of our 320 million total, but about 220 is what we really use for agriculture and other things. Out of that, roughly half, 100 million, is degraded officially in various forms. We need to reinvest in them. Our water bodies, roughly 7 million hectares of our water bodies are degraded either in terms of quantity or quality. We need to reinvest in them. हवा की तो बात ही मत करिए, दिल्ली में हम लोग सब लोग रहते हैं. All these will generate employment. They will generate employment immediately and for unskilled people and in every district of the country and without causing migration. We need to make a national commitment to invest between 2 to 3% of our GDP for regenerating our natural resources for the next 10 years. If we do that, we solve the short-term unemployment crisis. We create a longer-term opportunity for employment. Let me explain how. I worked in hundreds of watersheds myself. The average productivity in an untreated watershed is typically 1.2 tons per hectare. I'm combining all the cereals, you know. Rice to hota hi nahi un jagah mein, but you know, the coarse cereals and so on. Post, and typically one crop. Post watershed, and there are hundreds of studies. Post watershed treatment, productivity is typically 2.5 tons per hectare. Not because it's got doubled, but because double cropping sets in. So 1.8 ho jata hai. And then there is another, you know, about 30% of the area is cropped second time. And even 10% of areas, कई जगह में, particularly in the valleys, you can even take a third crop. सब्जी होने लग जाती है ऐसी जगह में जहाँ लोग मतलब उन्होंने कभी कोई greens देखे ही नहीं थे. And as a result, many other things happen. The services sector of the village takes off. The manufacturing does not take off. Services takes off, and nutrition levels take off. Investment on education and health takes off. So there are many other benefits that happen if we just reinvest in Jal Jangal Zameen. In the long run, that additional productivity also causes longer-term sustainable employment in agriculture. We've been lamenting the fact that jobs in agriculture have been coming down, and to the extent people have remained in agriculture, it is all disguised unemployment. If we invest in land, water, and forests, because forests are they're under the forest department largely, but they basically benefit agriculture productivity, then we end up creating sustainable demand for agricultural jobs. Further, the benefits of greater water availability for the non-agriculture sector, namely the industrial
and the so-called domestic, which was everything else actually, significantly then creates opportunities for, I mean, take a place like Tirupur, which was a boom export cluster. It almost shut down because there was no water. Right. Now, had we invested in the Kaveri watershed for the past 30 years consistently, we would neither have the Kaveri Delta crisis in the agriculture sector, nor would we have the crisis that Tamil Nadu is seeing right now, where there is a serious trade-off between demand for water for agriculture and demand for water for, just industry and intermediate sectors like poultry and so forth. So, I find it very problematic that our economic analysis doesn't get down to the nuts and bolts. We're still talking of the three sectors and all of that, but real economy is all happening, in real resources, and we need to invest in that. There are other jobs in the, what I call, to me, GDP should actually become green and digital by the way. Digital aapne bol diya, so I'm not going to talk about it. By the way, I am a digital engineer myself, so uski kahani alag hai. But the green sectors are not just agriculture, not just forestry. They are also the new green sectors. For example, renewable energy. I can't believe that India has reached a point where 40% of our energy is renewable sources. It's incredible. But there are jobs behind it. All those gigawatts of solar that have been installed require maintenance, require operations, require distribution. The waste that we talk of, the tons of waste, Gazipur mein abhi aag lagi hui hai. Recycling of that, there are millions of jobs in that. Today they are undignified, insecure jobs. If we, through policy and investment, and through the larger sector participating in that, if we convert those, there are millions of jobs in recycling, apart from the fact that it will clean up nature. So, we are basically ignoring the fact that there is not enough opportunities in the sector that we are not looking at. The bell has rung even for me. I was supposed to be the moderator, but I just thought that since this session is about what to do about the job crisis, instead of staying in the old paradigm of what to do, if we got to be truly Schumpeterian, I think we need to be digital and green. Now, do we have time for the... Okay. So, so maybe, Dilip, एक क्वेश्चन था जो रिस्पॉन्ड करना था। एक हमारे फ्रेंड ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सब कुछ अगर इतना ही ग्रीन है, सब कुछ इतना बुरा है, एग्रीकल्चर अब नया जॉब्स नहीं क्रिएट कर, नया एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और हम एक ग्लोबल रिसेशन लगभग अब दिखने लगा है बहुत सारे लोगों को कि सामने है, जॉब की इतनी बड़ी क्राइसिस है, सारा मतलब एक जनरेशन नोवेयर तैयार हो गया, इसको मालूम नहीं क्या करना है। तो ये पॉलिटिकल स्पेस में ये कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, कैसे हम रिकंसाइल करें कि ये जो पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस को जो लीड कर रही है गवर्नमेंट, वो इसके बावजूद उन्हीं जगहों पर जहाँ पर जॉब्स के लिए राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, इतने सारे गवर्नमेंट के पोस्ट इस समय खाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, टोटल वॉल्यूम वो 10 लाख से ऊपर का होगा, तो इसके बावजूद वो गवर्नमेंट कैसे खुद को सस्टेन कर रही है और उन्हीं लोगों का वोट कैसे ले रही है, ये क्वेश्चन आया था। एक्चुअली मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए कि क्या ऐसा वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से इस सारी सब कुछ इतना बुरा अगर हम मान रहे हैं, जो कि डाटा बोल रहा है, इवन गवर्नमेंट का डाटा बोल रहा है कि बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, इकॉनमी बहुत अच्छे शेप में नहीं है, जॉब मार्केट बहुत अच्छे शेप में नहीं है, इसके बावजूद एक पॉलिटिकल क्लास है जो कि उन्हीं लोगों का फिर वोट भी ले रहा है। ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल इकॉनमी का एक बड़ा सवाल इस समय होना चाहिए कि ये जादू, ये मिरेकल कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर वो
इकोनॉमी में कोई बहुत रिबूट फिर से बूट करने की कोई कोशिश या कोई ये रियलाइजेशन भी नहीं है इस गवर्नमेंट के पास, एटलीस्ट उसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और एटलीस्ट दे आर नॉट डूइंग समथिंग विच दे शुड हैव डन। ये कोई मतलब इस तरह का कोई थॉट वहाँ से नहीं आता हुआ दिख रहा है, एटलीस्ट ऑन द सरफेस नहीं दिख रहा है। तो ये सब करते हुए भी अगर पॉलिटिकली वो सर्वाइव कर रहे हैं और पहले से बेटर रिजल्ट्स वो दे पा रहे हैं, तो फिर ये सुधरेगा कैसे, कैसे कहाँ से ये सॉल्यूशन आएगा? इसमें एंट्री पॉइंट कहाँ पर है जहाँ पर बातें हो सकती हैं? तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो हम सब लोगों के लिए भी है और सॉल्यूशन दरअसल इस तरह कुछ नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन को ही मैंने थोड़ा सा ब्रॉड फ्रेम में डालने की कोशिश की है कि ये रियल इशू है इस समय और इसका कोई काउंटर नैरेटिव, कोई काउंटर आइडिया, क्योंकि आप अगर इस पीछे की तरफ जाकर देखें कि हम अब एक स्पेसिफिक सिचुएशन में नेहरू के मॉडल की ज़रूरत थी, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जो नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह जी ने किया था उसकी ज़रूरत थी, लेकिन उनकी वो पॉजिटिव एनर्जीज शायद इतनी नहीं बची हैं कि लोगों को हम बता सकें कि हम अब वहाँ चलते हैं। शायद वो उन एक नए समय की बात कर रहे हैं जिसकी सप्पल साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक नया दौर है इसमें कुछ नए सॉल्यूशन होंगे, तो वो अगर हम लोग ढूंढ पाएँ और उसके लिए मुझे लगता है कि खास करके बिल्कुल चीज़ों को बदल लेने की ज़रूरत है। पूरा नॉर्थ इंडिया इस समय सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स पढ़ रहा है और ये पढ़कर इनके पास दरअसल ये जो पूरी जॉब की क्राइसिस है वो इस बेल्ट में ज़्यादा है जो बीजेपी का ही बेल्ट है, जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब क्राइसिस है वहाँ बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट भी मिल रहे हैं। जो जहाँ इकोनॉमी सबसे स्टेगनेट की हुई है यही यूपी, बिहार और ये वाला जो पूरा इलाका है, यहीं से उनको सबसे ज़्यादा ताकत भी मिल रही है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस, जॉब क्राइसिस और इसका पॉलिटिकल डिविडेंड बीजेपी के पास कैसे जा रहा है, ये एक मेरे ख्याल से सवाल का जवाब मैं एक सवाल से ही दे सकता हूँ। बहुत अहम क्वेश्चन है, बट आई थिंक फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेशन लेट्स गो बैक टू द ऑडियंस एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और पॉइंट्स प्लीज। Yeah, I have a question. My name is Nisha Agarwal. I used to be with Oxfam. I think both this panel and the one before this are drawing parallels between what happened in 91 and possibly now with the war, rising oil prices and so on. And also saying very explicitly we need to go back and see what we did in 91 and maybe draw lessons from it. I think 5 years ago when we were trying to draw lessons 25 years after liberalization, one of the big lessons and consensus was that while it did lead to economic growth, it has led to very sharp rises in inequality. And one of the reasons for that was that we didn't create the kind of labor-intensive manufacturing jobs, the kinds that we have seen in East Asia, you know, double-digit growth year after year. Now is a moment when those jobs are leaving China and we are still not grabbing them. They're going to Vietnam, they're going to Bangladesh, they're going everywhere except India. So my question is, have we missed the boat on that for reasons of the kind that Gurdeep is talking about, or maybe Vijay, that they're not green enough, or AI is going to make those jobs disappear? Or do we have still a 10, 20, 30-year window where we could still get those jobs? Because I can't see where all these jobs are going to come from. Those jobs transform those countries, transform the lives of women, change I think Santosh has done a lot of work on this. But, in fact, so I'll request Santosh to because people are talking about all kinds of other things except this is the elephant in the room, sure, I think. Sure. Okay, जी, पीछे. हेलो, मैं लाल रत्नाकर, मैं पेशे से अध्यापक रहा हूं और अभी सेवानिवृत्त हो गया हूं, चित्रकार भी हूं। हेलो, हाँ, मैं डॉक्टर लाल रत्नाकर और मैं प्राध्यापक था फाइन आर्ट का और अभी सेवानिवृत्त हो गया हूं। अभी मैं आ रहा था गाड़ी से तो देश के प्रधानमंत्री परीक्षाओं के बारे में बोल रहे थे और इतनी हंसी आ रही थी कि एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए मैं एक जगह खड़ा होकर थोड़ी देर सुना। जिनकी नीयत ही हो लोगों को बेरोजगार करना, गुमराह करना और बिल्कुल उनको नस्ताबूद करना, दिलीप भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे मित्र भी हैं, ये यूपी के इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे कि बीजेपी जीत के आ रही है। तो मेरा उन्हीं से सवाल है कि कौन सा ऐसा वो जादू कर रहे हैं
कि जनता उन पर एकदम मगन है और वोट दे रही है और भूख से मर रही है। जहां 8 कितना करोड़ लोगों को भूखा, मतलब अभी 6-7 महीने से उन्हें भिक्षा दी जा रही हो, तो ऐसा कोई गुण होगा? हो गया मेरा। दिलीप जी से। जी 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 सर एक और जी, प्रश्न। मैं अनिका जी अनिका आर्यन, मैंने हिंद किसान चैनल में काम किया है। तो मेरा ये सवाल है सर, आप जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर में जॉब्स कम होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन नहीं है कि एग्रीकल्चर से लोगों को निकाला जाए और शहरों में लाया जाए? और इतने लंबे समय तक हमने अभी किसान आंदोलन देखा, जिस तरह के वादे किए गए, उसके बाद हम फिर वहीं खड़े हैं। किसानों की एमएसपी की दिक्कतें हैं, तमाम दिक्कतें हैं। इस पर फिर से वही बोलूँगी जैसे दिलीप जी ने बोला कि सल्यूशन क्या है, प्रश्न सामने रख के किस तरह से हम सल्यूशन निकाल सकते हैं। मेरा भी इसी पर एक और प्रश्न है। एक आखिरी प्रश्न और ले लें और फिर जी जी सर, जॉब्स के लिए लोग शहर पे आ जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही हो और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बंद हो जाए तो मतलब गांव में ही हो चाहे सेमी सिटी में ही हो कहीं जो, तो ये कोई ऐसा कुछ मतलब हमारे देश में सिस्टमेटिकली क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न समझ में आया? हेलो। हाँ, so my request to the panelists is कि 2-3 प्रश्न तो जो हैं they are really about the politics of India, and I think we should save this session for a more specific response on the economic front. Santosh, maybe we can start with Nisha's question. Particularly, are we missing the opportunity that China's transition is creating? Is it all going to Vietnam and Bangladesh? And Sir, I have one more question. We'll come back if we have time. आपकी इजाज़त से मैं निशा जी को तो जवाब दूंगा ही, मगर उनका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। I don't think, Nisha, we've missed the bus. We are missing the bus as we speak because this government doesn't have the policy framework in place. If it did, and it hasn't had it for 8 years, with all due respect. It hasn't had it for 8 years. And if it still started now, there are $150 billion worth of products which are exiting, and companies are exiting. And you're absolutely right in your understanding कि वो जा रहे हैं बांग्लादेश और कंबोडिया और इंडोनेशिया और वियतनाम। मगर इसीलिए मैंने शुरुआत में बात ये कही थी कि हमें एक औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। अगर वो औद्योगिक नीति हम नहीं अपनाएंगे, और ये माफ़ करिएगा, मैं ऐसे प्रांगण में ये बात कर रहा हूँ जहाँ कि यूपीए के दौर में भी कोई औद्योगिक नीति नहीं थी। अगर होती तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय गुड फ्रेंड हियर, अगर वो जॉब्स बन रहे थे मगर उस रफ्तार से जॉब्स नहीं तैयार हो रहे थे नॉन फार्म सेक्टर में जिस तरीके से वो हो सकते थे। द फोकस ऑन, and I said this, 50% of your manufacturing jobs are in labor intensive, the 5 sectors I named. और अगर हम उन 5 सेक्टर्स के लिए एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को तैयार नहीं करते, तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम उन जो कंपनीज हैं वो वहाँ से निकल रही, और हमारी स्वयं की अपनी इकाइयाँ वो कैसे जॉब्स क्रिएट करेंगी। तो ये एक लंबा सवाल है, मैं आपसे अलग से बात करूंगा, मगर मुझे लगता है समय कम है और पुष्पराज हमको, मगर आपका जो मुद्दा है, देखिए जल जंगल जमीन पे जिन लोगों को काम हम करवा सकते हैं वो वहाँ हैं, और उनको डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको वहीं देना है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में ही रहेंगे। बहुत देखिए, हमारा एग्रीकल्चर में आज की तारीख में 2019 में 20 करोड़ लोग थे, और वो 20 में रिवर्स माइग्रेशन की वजह से 3.25 करोड़ और पहुंच गए।
The whole process of the absolute number of workers in agriculture falling that had begun in 2004, it had not begun before 2004. That's a very important process to which we have to get back to. There's no question about it that workers have to be pulled out of agriculture. First, the 32 million which were added just literally overnight, and more would have been added in 21, we don't know. But in addition, all the work that needs to happen in Jal Jangal Zameen and in food processing. So food processing is a sector which is related to non-farm activity, but is going to give greater incomes in the agriculture sector. And I'm trying to be as brief as possible. जितना संक्षेप में मैं ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि बड़ा मुद्दा है और इसमें संभावनाएं बहुत हैं. Mahesh, if you could also add some data and some. Very briefly, very quickly, to Nisha's question, I will say that inequality is almost always there when there is a rapid growth process. It's almost inevitable. And what we saw after 1991 is inequality increased but poverty reduced. So we pulled a lot of people out of abject misery. Yes, the rich became richer, but the poor came out of abject poverty. So I think we should be a little tolerant towards the increase in inequality for some time and then repair that afterwards. The question on unemployment and political outcomes somebody had asked earlier, I'll tell you one very simple thing. I've answered this earlier, that unemployment affects very few people. It affects very few people, about 3% of total population. 7-8% unemployment rate is as a percentage of the labor force. So it's and unemployment is always blamed on the unemployed. The victim is blamed for the misery. So if a person is employed, he's told or she is told, you don't study as hard as Vijay does. And Vijay got a job and you didn't get a job. So you are a useless guy. But if there is inflation, you blame the sarkar. If there's high inflation, you blame the trader. So inflation, the blame goes to government. So governments the world over are a little more worried about rising inflation, but don't care too much about unemployment. So the politics of inflation, unemployment is kind of skewed against the unemployment problem. That's the reason why unemployment doesn't affect voting outcomes. Did you have to ask anything? No, I think that's also answered a number of questions about the mystery of the politics of India, apart from the magic of the economy of India that you already referred to. Gurdeep, one last comment and then we will. नहीं, मैं सिर्फ जो बार बार ये सवाल आ रहा है कि जीत कैसे गए, तो 3-4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है. एक कि वो टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ कर रहे हैं. आज हमारा वोटर कार्ड, आधार कार्ड मोबाइल से जुड़ा है, मोबाइल सोशल मीडिया से जुड़ा है, और मोबाइल का नंबर आपके जो लाभार्थी, जो बेनिफिशियरी डेटा है, उससे जुड़ा है. और ये बहुत ईजिली अब पॉसिबल हो गया है, जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर रही हैं, कि आपको एग्जैक्टली पता है कि किस मोहल्ले में किस कास्ट का, किस सब ग्रुप का व्यक्ति कौन सा गवर्नमेंट फ़ायदा ले रहा है, और आप कस्टमाइज्ड मैसेजिंग दिन भर करते हैं. पहली बात कि अगर उसको मदद दी गई है तो उसको दिन भर ये एहसास कराया जाता है कि सरकार मदद कर रही है. दूसरी बात, यही ग्रुप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के हिसाब से दिन में एटलीस्ट 6 मैसेज, और ये मैं 6 बड़े स्पेसिफिक नंबर बोल रहा हूँ, वो भड़काने वाले पहुँचते हैं, जहाँ पे कोई दुश्मन है जिसके खिलाफ आपके मन में एक विद्रोह की भावना आती है, पैशन जगाते हैं. और हर 2 घंटे में अगर आप हाइटेंड स्टेट ऑफ पैशन में रहते हैं किसी तीसरे दुश्मन के खिलाफ, तो आप असली कल्प्रिट से आपका ध्यान हट रहा है. ये इसको इतने इंटरेस्टिंग ढंग से इन्होंने मास्टर किया है, जो बेसिकली फेसबुक भी करता है, जो व्हाट्सएप. जब आप महंगाई के बावजूद भी, तो इफ वी टेक महेश's एक्सप्लेनेशन, या वी हैड अनएम्प्लॉयमेंट, ही एक्सप्लेन्ड कि 3% के कारण नहीं. उसमें सर एक और इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट लाइन जोड़ूंगा. लास्ट लाइन है, जो बेरोजगार हो रहा है और लगातार जिनकी जॉब जा रही है, अब एक नया विंडो खुल गया है कि आप 5,000 रुपये जेब में, आप दिन भर ट्रेडिंग कीजिए. 27 लाख एक महीने में लोगों की नौकरी जाती है. 27 लाख आपको दिखता है कि रिटेल ट्रेडर शेयर मार्केट में इन्वेस्टर आ गया है, और वो 5,000 रुपये दे के दिन में 200-300 रुपये कमा लेता है, कभी खो देता है, और रात को 12 बजे तक कमोडिटी ट्रेडिंग कोई वो चल रही है.
तो आप सुबह 10 से रात 12 बजे तक एंगेज भी हैं, इधर भड़काने वाले मैसेज पढ़ रहे हैं, उधर पैसा 100 रुपये कभी आ गया, कभी 200 रुपये आ गया, आपका घर भी चल रहा है। तो एक ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे कि आप फ्री टाइम नहीं है कि आप अपने जो नौकरी गई है उसको एक आंदोलन में कन्वर्ट करें, और दूसरा आपको रिलीफ भी मिल रहा है, रिलीफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से भी मिल रहा है, रिलीफ शेयर मार्केट से भी मिल रहा है। और अब जितनों का सर्वे मैंने किया है, मैंने जितनों से पूछा है जिनकी जॉब गई है, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ मोर देन 500 पीपल, ईच वन इज इनटू ट्रेडिंग टुडे, ईच वन, और 5 से 10,000 रुपये में कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल भी उन्होंने क्रिएट किया है। वी शुड नॉट मिस, आई थिंक दिस नीड्स अ लार्जर ग्रेटर स्टडी एंड अ डीपर रिस्पॉन्सेस टू इट। Thank you. Well, if nothing else, this panel represents multiple epistemologies. And I think that is how we are going to try and address India's job crisis, not through economics. Economics is the last discipline which will ever solve our jobs problem. Thank you very much. आखिरी बात तो हमने टच ही नहीं की, जो पूरा रिजर्व सेक्टर, जो हमारा रिजर्वेशन वाला सेक्टर है, उस पर जो हाल हो रहा है और वो भी खड़ा नहीं हो रहा है, वो किसी और सेशन में हमको बात करनी चाहिए। जी, Thank you.